Hello and welcome to this special broadcast on Sansad TV. I am Teena. Prime Minister Narendra Modi participated in the 16th BRICS Summit held in Kazan, Russia, held under Russia's chairship, themed Strengthening Multilateralism for Just Global Development and Security. BRICS 2024 was held from the 22nd October to the 24th. BRICS leaders held discussions on key issues, including strengthening multilateralism, countering terrorism, fostering economic growth, pursuing sustainable development and bringing spotlight on the concerns of the Global South. Prime Minister Modi addressed two sessions, emphasizing on the need for the group to take a people-centric approach to tackle the existing global uncertainties and challenges. In Kazan, the Prime Minister also held several bilateral meetings with world leaders, including Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping. With President Putin, it was Prime Minister Modi's third meeting this year, while the bilateral with President Xi Jinping was the first structured one in almost 5 years. The outcomes of these meetings, the important points made at the BRICS Summit that found mention in the Kazan Declaration, and the leaders' commitment to further enhance BRICS solidarity and cooperation. All this and much more in this special report on the Prime Minister's visit to Russia. Prime Minister Narendra Modi arrived to a rousing reception in Kazan, the Russian heritage city hosting the BRICS Summit. With a large gathering of members from the Indian community, the Prime Minister was welcomed with beats of dhols, cymbals and chants. In a beautiful display of cultural exchange, some Russian nationals dressed in Indian attire sang Krishna Bhajan for the Prime Minister. With hands folded, the Prime Minister acknowledged the heartfelt gesture. Krishna, Krishna, Hare Hare. Prime Minister Modi then sat down with Russian President Vladimir Putin for a bilateral meeting on the margins of the 16th BRICS Summit. In what was their second meeting this year, the two leaders reviewed the entire spectrum of India-Russia relationship with a special focus on the progress on the decisions taken during their last meeting in Moscow in July 2024. The talks also focused on how to add even more vigor to the bilateral partnership across diverse sectors. मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। The leaders exchanged views on India-Russia engagement in multilateral fora, in particular in BRICS. They also shared views on key regional and global issues of mutual interest, including the ongoing conflict in Ukraine. The Prime Minister reiterated that dialogue and diplomacy was the way forward in resolving conflicts. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है,
हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। The meeting also witnessed a light moment when the Russian president said he thought Prime Minister Modi would understand his remarks without translation, as both nations shared a tight relationship. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। In Kazan, Prime Minister Modi also witnessed an exhibition on Mahatma Gandhi, highlighting his engagement with Leo Tolstoy. At the 16th BRICS Summit, the leaders welcomed the 13 new BRICS partner countries. They reiterated the importance of further enhancing BRICS solidarity and cooperation based on mutual interests and key priorities, and also further strengthening their strategic partnership. Prime Minister Modi addressed two sessions of the BRICS Summit. He extended a warm welcome to the partner countries who joined the group. He said, in its new avatar, BRICS accounts for 40% of the world's humanity and about 30% of the global economy. नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। Noting that the summit is happening at a time when the world is undergoing several uncertainties and challenges, including conflicts, adverse climatic impacts, and cyber threats, placing greater expectations upon BRICS. The Prime Minister suggested that the group take a people-centric approach to tackle these challenges. He also underlined the need for early adoption of a comprehensive convention on international terrorism at the United Nations to combat the menace of terrorism. Friends, climate change हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम
जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। The Prime Minister also called upon BRICS to proactively push for global governance reforms, recalling the Voice of Global South summits hosted by India during its G20 presidency. The Prime Minister stressed that the group must give primacy to the concerns of the Global South. The 16th BRICS Summit concluded with the adoption of the Kazan Declaration, a 43-page document outlining areas of cooperation and the group's stand on global issues. The leaders expressed commitment to the BRICS spirit of mutual respect and understanding, sovereign equality, solidarity, democracy, openness, inclusiveness, collaboration and consensus. They reaffirmed their support towards strengthening multilateralism for a more just and democratic world order, enhancing cooperation for global and regional stability and security, fostering economic and financial cooperation for just global development, and strengthening people-to-people exchanges for social and economic development. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi held a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping. This was their first meeting in the past 5 years that came after India and China reached an agreement regarding the withdrawal of troops deployed in Ladakh and the resumption of patrolling the way it happened before the standoff began. Welcoming the recent agreement for complete disengagement and resolution of issues that arose in 2020 in the India-China border areas, Prime Minister Modi underscored the importance of properly handling differences and disputes and not allowing them to disturb peace and tranquility. The two leaders agreed that the special representatives on the India-China boundary question will meet at an early date to oversee the management of peace and tranquility in border areas. Further, the relevant dialogue mechanisms at the level of foreign ministers and other officials will also be utilized to stabilize and rebuild bilateral relations. The two leaders also affirmed that stable, predictable and amicable bilateral relations between India and China, as two neighbors and the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। On the sidelines of the BRICS Summit, Prime Minister Modi also met the President of UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Iranian President Shavkat Mirziyoyev, and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. Wrapping up the impactful visit to Kazan, the Prime Minister described it as a productive one that gave him the opportunity to discuss diverse issues and interact with various world leaders. He also conveyed his best wishes to Brazilian President Lula da Silva, the next president of BRICS. So that's it from us on this broadcast. Thank you for your time. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।